अथ तंत्रोक्त रात्रिसूक्तम्। ओं विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीमस्थितिसंहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णु रतुलां तेजस प्रभु। ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं वदास्त्वं हि वषट्कारः स्वरात्मिका सुधा त्वम् अक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुचार्या विशेषतः तमेव संध या सावित्रीत वं देवी जननी परात् वयेतद्धार्यते विश्वमत् वयेतत्सृजते जगत् वयेतत्पाल्यते देवीत वमत्सन्ते च सर्वदा विसृष्टो सृष्टिरूपा त्वमस्थितिरूपा च पालने तथा संहन्ति रूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मयी महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः महामोहा च भवती महादेवी महासुरी प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रयभाविनी कालरात्रेर्महारात्रेर्मोहरात्रिश्च दारुणात् वंशिस्तवमीश्वरितमृस्त वं पद्यर्बोधलक्षणा लज्जापुष्टिस्तथा तुष्टिस्त वं क्षान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी च कृणी तथा शंकिनी चापिनी बाण भूषण्डी परिगायुधा सौम्या सौम्यतराशेष सौम्यभ्यस्वती सुंदरी परापराणां परमात् वमेव परमेश्वरी यच्च किंचित् क्वचिद् वस्तु सदसद्वाखिलात्मिके तस् सर्वस्य या शक्तिः स्वातं किमस्तु यसे तदा या त्वया जगत्सृष्टा जगत्पात्यतियो जगत्सोऽपि निन्द्रावशं नीतः कस्तान्तो तु महेश्वरः विष्णु शरीरग्रहणमहमीशान एव च कारितास्ते यतो अतस्त्वां कस्तोत्तुं शक्तिमान् भवेत् स्वात्मित्थं प्रभावे हे स्वे रुदारेर्देवि समस्तुताः मोहयेतो दुरादर्शा वसुरो मधुकेटभो प्रबोधं च जगत्स्वामी नियतामच्युतो लघु बोधश्च क्रियतामस्य हन्तुमेतो महासुरो इति रात्रिसूक्तम्।